there are a lot of things that worked for the BJP at that time, but from a brand perspective, a few things that as a brand you can apply any day. One, make a villain. Always have a villain. If you can build a villain, Coke doesn't have this like larger purpose of solving the world's problems, right? No, of course not. They're doing it now because they have to. Purpose of Coke is to become a social connector. Their purpose is to drive happiness, because when you meet people, there is happiness. There is an innate sense of joy. एंड तभी अगर आप कोई भी एडवर्टाइजिंग देखें कोक की, आपको सिर्फ एक नहीं मिलेगा कहीं पे. There will be more people involved. Usually their end screen is two glasses clinking. Purpose marketing एक कैटेगरी बन गई है अवार्ड फंक्शंस में. CSR टाइप या कॉज ड्रिवन मार्केटिंग ही होती है, तो लोगों को लगता है पर्पस का मतलब ही वो. That's what I try and explain people, because what that ends up doing is that people create stuff only for awards. On today's episode of Just Curious podcast, we have with us Nikhil Kant. Nikhil is a head of brand at Even right now, और उसके पहले वो ग्लोबल सोशल मीडिया लीड थे ऊबर के. ऑल्सो निखिल इज़ एन एंजल इन्वेस्टर, तो उन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है. इन दिस पॉडकास्ट एपिसोड मैंने और निखिल ने बात करी है अराउंड सोशल मीडिया मार्केटिंग इंडस्ट्री, और किस तरीके से आपको मार्केटिंग कैंपेन्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, किस तरीके से आप सोशल मीडिया के ऊपर IPs बिल्ड कर सकते हो अपनी. मैंने उनसे बात करी है कि कोक स्टूडियो, जोमालैंड जैसी इवेंट करा के ब्रांड्स को क्या फ़ायदा मिलता है, तो उसके ऊपर हमारा काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट, निखिल हैज़ ऑल्सो वर्कड ऑन BJP's जनरल इलेक्शन कैंपेन ड्यूरिंग 2014. तो एक पॉलिटिकल कैंपेन को किस तरीके से मार्केट किया जाता है, तो उसके ऊपर भी हमने इस पॉडकास्ट के बारे में बात करी है. ऑल एंड ऑल, अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग इंडस्ट्री या मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेट करते हो, या तो फिर उस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, then you must listen to this podcast till the end. आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी from Nikhil, because he has around 13 years of experience. On that note, welcome to another episode of Just Curious podcast, where we decode the mindset of our guest through curiosity. And on today's episode, I decoded the mindset of Nikhil Kant. How are you, Nikhil? Hi, what's up? ये आपने बाल क्यों बढ़ाए हुए? Like, is that kind of a thing with like Seth Godin, वो जो येलो चश्मे पहनता है because it distinctively वो दूसरा दिख जाता है, ऐसा कुछ है या फिर? It's become मेरे लिए ना बन गया ये थोड़ा एक ब्रांड. हाँ. मैं उस नजरिए से शुरू नहीं करा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे को हमेशा से शौक था यार बाल लंबे करने का. एंड मैं बहुत रॉक एंड रोल मेटल म्यूजिक फैन हूँ. तो मेरे सारे हीरोज एंड आइडल्स हैव हैड लॉन्ग हेयर. तो मेरा शुरू से बहुत मन था लंबे बाल रखने का. बट आई कम फ्रॉम एन आर्मी फैमिली, एंड after that, of course, working in in the early stages of my career, कभी मौका नहीं मिला. हमेशा से you have to be very prim and proper. हाँ. फिर कोविड हुआ, तो लॉकडाउन के टाइम पे मेरे को लगा चलो यार ये मौका है, अभी कम से कम 3-4 महीने तो किसी को शक्ल नहीं दिखानी अपार्ट फ्रॉम जूम मीटिंग्स, तो कर लेते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज. अब वो 4 महीने का आज 3.5 साल होने वाला है. तो but हाँ यार, I just wanted to always grow my hair, and I got an excuse कर लिया. Now it's become a brand. So Seth Godin के जैसे येलो चश्मे हैं, मेरे लंबे बाल हैं. कहीं भी आपको लिंक्डइन पे अगर कोई लंबे बाल वाला मार्केटिंग एंड लंबे बाल मिल जाता है, तो पीपल गेस के यही होगा. हाँ भाई, क्योंकि मैं आपको बोलने वाला था. So when I looked at your profile, मुझे याद आया रॉक ऑन वाला अर्जुन रामपाल का जो था ना लुक, द अर्ली पार्ट ऑफ रॉक ऑन में बताते हैं वो लोग नया फॉर्म. हाँ, इट वाज. सो आई वाज लाइक कि हाँ, आप भी ऐसे कोई बैंड, आपको कोई देखे तो ऐसे लगेगा कि यार जैज म्यूजिशियन या ऐसा कुछ ही होगा कोई. ये मैं फेल्ड म्यूजिशियन तो हूँ, ठीक है. दिस इज ऑन माय नाउ एक्स बायो एज वेल. कि आई एम अ फेल्ड म्यूजिशियन, आल्सो ऑन माय इंस्टाग्राम बायो आई थिंक. क्यों, क्या है स्टोरी? या स्टोरी है कि मेरे को गाने बजाने का बहुत शौक था जिंदगी में. एंड लाइक आई सेड, आई कम फ्रॉम अ वेरी म्यूजिकल हाउसहोल्ड यार. मतलब मेरे फादर गिटारिस्ट थे, मेरी मॉम सिंगर हैं, मेरे बड़े भाई भी सिंगर हैं. तो म्यूजिक हमेशा से फैमिली में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. तो ऑफ कोर्स पले बड़े म्यूजिक के अराउंड, तो मन कर ही जाता है यार म्यूजिक के अराउंड कुछ कर लेते हैं. बट व्हेन आई वाज व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग, तब म्यूजिक वाजंट अ वेरी lucrative option, to be very honest.
उसमें करियर बनाना बहुत मुश्किल था हमारे टाइम पे। तो यूट्यूब वगैरह था नहीं इस टाइम पे, और मैं ऑनेस्टली इतना अच्छा म्यूजिशियन भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरे को क्या दोष दूं, बट मेरे को शौक था। मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करा, आई प्लेड इन अ फ्यू बैंड्स, प्लेड इन अ फ्यू वेन्यूज इन दिल्ली। बट हाँ, जो म्यूजिक मुझे पसंद था उसकी मार्केट वैसी मर रही थी। आई मीन टू वेरी ओल्ड स्कूल रॉक एंड रोल म्यूजिक, वो कोई नहीं हाँ सुनता। एंड मैंने सोचा यार इसमें पैसा तो बनेगा नहीं, तो लेट्स फिगर आउट, देयर आर थिंग्स वेयर यू विल रियलाइज इन लाइफ के यू रियली लाइक समथिंग एंड यू रियली लव समथिंग, बट यू मे नॉट बी वेरी गुड एट इट। हाँ एंड एट दैट टाइम कोई छोटा नहीं हो जाता ये स्वीकार करके कि यार ठीक है ये नहीं हो रहा, लेट्स फिगर आउट व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। हम्म, मेरे साथ यही था, मेरा म्यूजिक पहला लव था, सेकंड वाज एडवर्टाइजिंग। सो आई thought I'll be able to make more money in advertising, so I chose my second love instead of the first one. I started my career as a auditor, as an auditor in KPMG, suit boot, shave, छोटे बाल, बिल्कुल सुधरा लड़का। 6 महीने मैंने ऑडिटिंग करी थी यार केपीएमजी में, और तब वाह भी मुझे लगा था यार, वाह जिंदगी सेटल होगी, बट अंदर से आई वाज नेवर हैप्पी। And then after 6 months, I decided I quit and I joined an ad agency, a young startup। 25 लोगों की ad agency थी वो, एक घटिया सी मार्केट के चौथे फ्लोर पे थी। और मैं केपीएमजी से निकला था, राइट? केपीएमजी इज अमेजिंग ग्लास बिल्डिंग, एंड लाइक सडनली इनटू दिस रैट इन्फेस्टेड ऑफिस। तो उस टाइम पे भी लोगों को लगा था यार ये क्या पागल है क्या, क्या डिसीजन लिया तूने, तू केपीएमजी छोड़ रहा है जहाँ पे लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं हम्म, एसेंशियली। और तू एक तो एड एजेंसी पता ही नहीं था मेरे खानदान में किसी को होता क्या है, लाइक व्हाट इज एन एड एजेंसी। हाँ और ये कब की बात है ये? ऑन एंड अराउंड 2010। 2010 था। और उस टाइम पे भी एड एजेंसी में मैंने क्या ज्वाइन की थी, डिजिटल एड एजेंसी। उस टाइम पे डिजिटल तो पता ही नहीं था किसी को क्या होता है, हाँ फेसबुक तक नहीं आया था इंडिया में तब। हाँ तो मेरी माँ को तो लगता था मैं आईटी में हूँ कि कंप्यूटर ठीक कर रहा है बैठ के लोगों के। बहुत टाइम बाद लोगों को समझ आया, एंड आई थिंक अगेन लाइक दो, अगर मेरे को वो डिसीजंस लेने से मना कर दिया गया होता, या मुझे पुश बैक मिलता, या मेरे मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता मेरे घर से, तो बहुत डिफरेंट होती लाइफ यार। मैंने या अपना ट्रू। करियर इन डिसीजंस पे ही बनाया है, आज मैं हूं बिकॉज आई हैड द पार्ट ऑफ माई लैंग्वेज इन बीप कर देना इसको, बट आई हैड द freaking balls to take those decisions at that time, only because I had the support of people at the back, and I knew if I would fall they will help me get back up. So yeah, that's been the life, man. It's been an interesting life, like I said, I can't complain. Like what's your relationship with father then? Like it was It kind of a very good. was very good. My father was my hero यार, मतलब मैंने गिटार बजाया क्योंकि मेरा बाप गिटार बजाता था, मैंने बाल लंबे इसलिए करे क्योंकि मेरे डैड के बाल लंबे, जब उन्होंने आर्मी छोड़ी तो हाँ उन्होंने बाल लंबे करे थे। मैं रॉक एंड रोल इसलिए सुनता हूँ कि मेरे बाप ने सिर्फ मुझे रॉक एंड रोल सुनाया जिंदगी में। एवरीथिंग आई डू टुडे इज आई एम हाँ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ माय फादर, लिटरली आई कॉपी हिम। So I had a very, very, very strong relationship with my father. That's why losing him at that age was, it's by far and forever will be the worst thing that's happened to me. हाँ उससे मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। तो तो हाउ यू डेल्ट विद दैट? वर यू बिकम वेरी नम कि कोई रिएक्शंस नहीं निकले, या तो फिर लाइक इट जस्ट बिकॉज जैसा होता है ना, सुशांत सिंह राजपूत ने भी ये बोला था कि व्हेन हर मदर पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज, सो ही वाज लाइक कि रोना ही नहीं आया यार मेरे को तो उस दिन के ऊपर। सो और फिर लाइक पीपल डील विद ग्रीफ वेरी डिफरेंटली, हाउ यू I, डेल्ट विद दैट? yeah, everyone's grief is different, and I think मेरे को तो बहुत रोना आया था भाई। मैं तो I was gone. My mother was worse, because she of course lost a companion, right? तो मेरे को दो तीन चीजें हेल्प करी थी उस टाइम में। माय वे ऑफ डीलिंग विद ग्रीफ वाज अ लिटिल डिफरेंट। वन वाज आई थिंक माय फ्रेंड्स अराउंड मी। आई थिंक ये मैंने अच्छा करा जिंदगी में, जब मैं दिल्ली में आके सेटल हुआ था, जो मैंने दोस्त बनाए अपने, वो मुझे जेन्युइनली उस टाइम पे रियलाइज हुए कि दोस्त हैं और कितने इंपॉर्टेंट है सारे, ऑल ऑफ देम, नॉट वन फ्रेंड ऑफ माइन वाजंट देयर फॉर मी। सो व्हिच वाज वेरी गुड, वेरी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। Also very thankful to their families who let their kids go for sometimes 4-4 5-5 दिन आगे रुके हैं मेरे साथ दोस्त। और and mind you, these are 19-20 year old people, अभी भी हाँ माँ बाप से परमिशन लेके बाहर जाना होता है। तो those that really helped. The second thing I did was I buried myself in work, man. I think a very unhealthy way of dealing with grief, looking back. हाँ
बट मैंने भाई अपने आप को बिल्कुल डुबा ही दिया काम में. So उस टाइम पे भी again my company that I was there, the ad agency that I joined and I spent 8 years in Interactive Avenues, um, most thankful to that company forever. It made me the human I am. But at that time they were so supportive. So they had an office in Delhi and they had an office in Bombay, and my Masi stays in Bombay, my mom's real sister. And my mom was so broken at that time. It was just very difficult for me to handle her. मैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया था हम दो लड़कों के लिए ऐसे हैंडल करना. तो हमने डिसीजन लिया कि लेट्स मूव मॉम टू बॉम्बे. हम साथ में, ऑफ कोर्स सारे साथ में जाके बॉम्बे थोड़े दिन महीने जितने रह सकते हैं. मदर के साथ भी उनकी बहन होगी, और ऐसा तो नहीं हम यार हम हमेशा के लिए ऑफिस से छुट्टी तो नहीं ले सकते, राइट. हाँ. तो हमने वो डिसीजन लिया. सो आई वर्कड आउट ऑफ बॉम्बे फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड because I was safe that my mom has her sister with her, I could go to work and just work like an ass. But I was working like crazy, man. Mera dimag, I hate my way of processing grief is not to think about it, and the way I don't think about anything is when I'm working. When I'm working, I'm just like I have tunnel vision when I'm working. I just work. So मेरे को वो बहुत help हुई. Personally, I was able to just get out of that because of that. Third, and this is the way I think both my mom and I got out of it, was I realized that there's always, and people hate comparisons, but this is one comparison I think we should all do, which is there's always somebody who has it worse than you. किसी का दुख तुमसे ज्यादा है आज की डेट में, कहीं पे भी. I've lost my father when he was 49, but I still lived with him for 20 years. There are people who've never even seen their father, right? Like things like those have also happened. So I used to keep telling mom that, just take strength in through other people's miseries also, and be Yeah. inspired. If people who've dealt with so much can do so much in life, then हमारा भी है, ठीक है, दुख है, हो जाएगा यार. Life will move on and it has to. So like look at Shah Rukh Khan, dude. Like you don't Yeah. have to go far, right? Look at Shah Rukh Khan. Look at the life he's lived. He lost both his parents so early. He single-handedly made himself what he is, and he's the biggest person on the planet. I think it won't be lying if we say that Shah Rukh Khan is probably the most famous person on this planet. Yeah. And if somebody can do that to himself without any support, I'm sure we can come out of our miseries faster. So I take inspiration from people like this yaar all the time. So या आपने शाहरुख खान का बोला, मैं अभी ना स्टीव जॉब्स की वो बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, वॉल्टर आइजैक्सन वाली, और उसमें भी स्टीव जॉब्स का लाइक वन ऑफ द थिंग विच हर्ट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था कि उसके जो बायोलॉजिकल फादर एंड मदर थे उन लोगों ने उसको अडॉप्ट करा दिया था दूसरे लोगों से. सो ही वाज लाइक इन दैट काइंड ऑफ अ जोन कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा कुछ हुआ. दैट्स व्हाई ही केम टू इंडिया एज वेल टू yeah, जस्ट डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स. इन अ वे ही लॉस्ट देम, ऐसा लाइक लाइक डेथ नहीं हुई थी, बट दे जस्ट, तो उसके लिए वो बहुत ऐसा डील करना बहुत ज्यादा हो गया था. एंड दैट काइंड ऑफ फ्यूल्ड हिम लिटिल बिट इन हिज अर्ली लाइफ कि कुछ तो करना है ऐसा. लाइक अडॉप्टेड फादर एंड मदर वाज रियली गुड फॉर हिम, but he was kind of dealing with his own self. That's why he came to India, वो नीम करौली बाबा वाला जो भी yeah. वो उसने वहाँ पे किया था, and then he went back. हाँ. So yeah, true. Then how did मतलब आपने बोल दिया कि ये वाली चीजें हुई, and when your ad agency work started, like it was around, like you said 2010 11. So and you started working on which brands at that point of time? So I actually had the good opportunity to work on some amazing brands, dude. Like at the start, of course, when you join, you don't get the cream of the crop. But over time, when I showed good promise, I was dealing with brands like for example, I was dealing with Coca-Cola, their entire portfolio in India. I was handling the digital, social media and creative and digital media duties. So, but imagine, dude, like at 23, 24, working on a brand like Coca-Cola, yaar, दुनिया का the most distributed, the most loved, the most known brand in the world you're working. World. I was also working on Thumbs Up, on Sprite, on basically all the Coca-Cola brands. I got the chance to work on Reckitt Benckiser, which has brands like Dettol, which is the world's most respected brand, I think. And all the other brands, Veet, Scholl, stuff like that. Then I worked on Micromax, which was my favorite brand, I think.
हाँ आप पता नहीं आपकी उम्र कितनी है, आपको पता भी नहीं होगा शायद वो ब्रांड क्या है, बट मैं ना माइक्रोमैक्स आई न्यू। एक आई टाइम वॉज इन 8th स्टैंडर्ड जब माइक्रोमैक्स लॉन्च हुआ था। एक टाइम पे वो इंडिया का बेसिकली वाज द चैलेंजर टू सैमसंग इन या इंडिया। होम ग्रोन cheap smartphones, but very good in productivity, very good phones. But their edge was their marketing. Micromax was built on marketing. And I was a part of that team when, the peak happened. Like I was the part when Micromax dude got Hugh Jackman as a endorsement, as a brand ambassador, right? Hugh Jackman, Wolverine, like that kind of stuff. We were doing concerts left, right, and center. We got Snoop Dogg to India. We were sponsoring sunburns, doing rock competitions. The marketing was super cool, and I learned a lot, and I did a lot of things. I had a lot of fun, made some amazing connections, which will last throughout my life. And again, जो glamour होता है ना advertising का, वो मैंने तब जिया था माइक्रोमैक्स के टाइम पे। बहुत मजा आता है, and I loved my clients and they loved me hopefully. तो उनमें 3-4 साल उधर काम करा। Then I got the chance to actually work on BJP for elections as well. So the in 14 वाला। दोनों यार, 2013 में दिल्ली इलेक्शन, 2014 में जनरल इलेक्शंस, तो ओ दोनों पे ग्रेट। काम करा मैंने। 2013 वाला हार गए, दिल्ली वाला, तब केजरीवाल जी जीत गए। एंड 2014 में किरण बेदी वाला ना। नहीं नहीं नहीं, दिस वाज अगेंस्ट आप यार, चीफ मिनिस्टर। हाँ चीफ चीफ मिनिस्टर, बट सामने कौन था? मनोज तिवारी। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके You won't ओके। even know that it was not the most successful campaign, and he wasn't. हाँ I think at that time one of those most star campaigner type नहीं थे, but Dr. Harshvardhan is a very strong individual and a great personality, great politician, and he was actually also the minister of health in the first cabinet. So again, so I did that. I worked on 2 elections, had a ball. बहुत मजा आया, बहुत नामी नामी लोगों से मिला, बहुत हाँ पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखा, एंड एडवर्टाइजिंग इन पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखा। और बहुत क्रेजी था, हफ्ते हफ्ते नहीं सोते थे, ऑफिस में हाँ। ही रातें बिताई हैं कितनी, क्योंकि बहुत काम होता था ड्यूरिंग इलेक्शन। यू कैन इमेजिन एवरी मिनट इज अ न्यू थिंग। या सो yeah man, learned a lot about the electoral process, learned a lot about India, I think, at that time. uh, क्रेजी। yeah, some of these brands, I worked on Fitbit, worked on Royal Enfield, some pretty cool brands, man. I got a chance to work on really या cool brands. And after that, I went to Uber, which is, of course, one of the coolest brands ever. या Once in a generation company. हाँ। मुझे उसके ऊपर वो मतलब लाइक आई कैन आस्क 10 questions from this only answer, but I just want to know कि जब ये जैसा आपने बोला कि माइक्रोमैक्स वर डूइंग कॉन्सर्ट्स इन इंडिया, दे वर इनवाइटिंग स्नूप डॉग ऐसे वाला। वी लास्ट ईयर वी सॉ लाइक जोमालैंड कराया था जोमेटो ने। कोक का कोक स्टूडियो होता है। सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज देयर थिंकिंग बिहाइंड दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, बिकॉज कोक स्टूडियो से कोक का क्या होगा जोमालैंड कराने से? So Yeah. what they are trying to think, and what is the creative strategy behind doing this kind of things? So, like, of course, I can't explain everything to you in like a podcast, हाँ but there are multiple facets why people do this. One is you are able to have a very captive audience in these things. ओके People become fans, and when they become fans, they stick with you. There is a natural connection with you. A person who goes and looks forward to Zomaland all the time every year inherently will choose Zomato over Swiggy when they want to order, because unke dimag mein there's a loyalty towards a certain brand. It's a very subliminal thing. That's why by the way, everybody I meet, I tell that they should read psychology, because psychology helps you understand the concepts of marketing much more. But yeah, so one is that. The other thing is, after a while, what happens is your brand reaches a certain level of awareness. हाँ उसके ऊपर अवेयरनेस बिल्ड करना पॉसिबल ही नहीं होता। आज की डेट में ऐसा बहुत ही कम लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको जोमेटो नहीं पता होगा, या जिनको कोक नहीं पता होगा, फॉर एग्जाम्पल। तो करेक्ट दैट लेवल यू डोंट वांट टू बिल्ड अवेयरनेस, यू वांट टू बिल्ड कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर जब मुझे कुछ खरीदना है और मेरे सामने दो ऑप्शन है, सॉरी, अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मेरे जहन में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो चीज खरीदने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो उसके बाद आता है प्रेफरेंस, उसके बाद आता है एक्शन। प्रेफरेंस का मतलब होता है मेरे जहन में मैंने चॉइसेस बना ली हैं, उन चॉइसेस में से मेरे को क्या प्रेफर मैं करूंगा,
और फाइनली जिसको प्रेफर करता हूँ उसको जाके खरीद रहा हूँ कि नहीं खरीद रहा हूँ. ये फनल होता है एक दिमाग का और मार्केटिंग का भी. तो अब अवेयरनेस तो इतनी हो गई, अब मुझे कंसिडरेशन में आना है. कंसिडरेशन और प्रेफरेंस के लिए आप ऐसी चीजें करते हो क्योंकि यहाँ पे आप अपना ब्रांड जोमेटो नहीं दिखा रहे हो क्योंकि सबको पता है जोमेटो क्या है, बट आप दिखा रहे हो कि जोमेटो कितना कूल ब्रांड है और आपके आपके जैसा नजरिया रखते हैं. कोक कितना कूल है क्योंकि आप म्यूजिक सुनते हो और आपको जैसा म्यूजिक पसंद है वो वैसा म्यूजिक आपको दे रहे हैं. तो अब ओवर टाइम यू बिकम मच मोर लॉयल टू दैट ब्रांड एंड यू प्रेफर एंड यू कंसिडर दैट ब्रांड ओवर मोर अदर पीपल. थर्ड इज यू बिल्ड लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज एंड इट बिकम्स ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी ओवर टाइम, राइट. आज की डेट में कोक स्टूडियो, आप कोक का नाम तो ले रहे हो, लोगों के जिन्होंने नहीं सुना उनको सुनाई देगा कोक क्या होता है. So things like those become properties for the long term, and long term properties are what survive on advertising and marketing. And it's very difficult to build long term properties, by the way. It's very easy as an advertiser or as a marketer to build a new campaign every time. It's very easy, trust me. What is very difficult is to create one thing that you can repeat forever and still be relevant. And the examples of that is Coke Studio. The example of that is the line "Just Do It," written by Nike. The example of that is Hema Rekha Jaya Sushma Sabki Pasand Nirma. The example of that is the Amul girl. These are properties long term. आज से 30 साल बाद भी अमूल गर्ल जब अखबार में आएगी तो वो रेलेवेंट होगी. सो वो बहुत मुश्किल होता है यार बनाना. दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, इज टू बिल्ड अ प्रॉपर्टी. न्यू एड वेरी इजी. अभी तो मुझको एक ब्रीफ दो, 10 आइडिया मैं आपको बताऊंगा. बहुत इजी होता है. ह्यूमन बीइंग्स आर अट्यून्ड टू डू आइडियाज. इंटरेस्टिंग. हाँ, तो जैसे लाइक राइट नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 12 years. 13 years. हाँ जी. 13 years. हाँ. So now you have seen from the early days of digital to now, like it's kind of booming where everyone is on their phone. वो सब वाली चीजें. तो like you said this very interesting thing about social media, particularly content के अंदर वाले में, और like when people are advertisers are thinking their ideas, कि people confuse causes with purposes. So I just want to know ki like what is this, like what is the meaning of this, and can you go a little bit 2-3 layers deeper on that and tell me how to separate both of them? Yeah. So the thing is, whenever you're building content or whenever you're building marketing material for yourself, this is one thing that I truly ask everybody to do, which is find your purpose and build things around your purpose. And when I say that, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ना पर्पस मार्केटिंग एक कैटेगरी बन गई है अवार्ड फंक्शंस में, जहाँ पे सिर्फ CSR टाइप या कॉज ड्रिवन मार्केटिंग ही होती है. तो लोगों को लगता है पर्पस का मतलब ही वो होता है. पर्पस का मतलब वो नहीं होता है. That's what I try and explain people, because what that ends up doing is that people create stuff only for awards, which is a problem. Then they're not being true to the purpose of the brand or of the company that they're in, right? So purpose and cause though is very simple to understand, where you're trying to do, say, help something which needs helping, essentially. You're trying to help children, you're trying to help animals, you're trying to help refugees, minorities, whoever, whatever. Purpose means the reason of existing as a brand or as a human being for you. And that doesn't always have to be a large cause. There is a reason why your company was started, why your brand was started. What is that reason? You have to understand and then do things around that. So for example, Uber का purpose statement था कि when you basically movement ignites opportunities was the larger purpose of the brand, which means अगर लोग move करना शुरू हुए तो opportunities ignite होती है, because history is क्या बोलते हैं, history is evidence and witness of that. The most important invention in humankind's history was the wheel, because you could get food faster from one place to another, and everything just started from there, right? The wheels of motion kind of were into play. So similarly, if you can get people to move easily, it ignites opportunities in the sense women can go to work faster and safer. Children can go to school faster and safer, and probably even farther. Students can go and take up
opportunities which are far from them because they can reach there faster than before. I can do meetings sitting in Delhi. I can go from Gurgaon to Noida, which otherwise I wouldn't have been able to, for example. So it ignites opportunities, and that is the purpose. Now that doesn't mean there's no cause in it, right? Essentially, ऐसा हाँ नहीं कि मैं refugees को support कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं सिर्फ LGBTQIA plus community को support कर रहा हूँ. वो of course those are causes we took on ourselves. But the main purpose of the brand is if I can get people from A to B in fast, cheap, and safe manners, that will in truly change the world, and that's exactly what happened. So similarly, Coke, for example, Coke doesn't have this like larger purpose of solving the world's problems, right? No, of course not. They're doing it now because they have to. But what is the purpose of Coke? The purpose of Coke is to become a social connector. Their purpose is to drive happiness, because when you meet people, there is happiness. There is an innate sense of joy. एंड तभी अगर आप कोई भी एडवर्टाइजिंग देखें कोक की, आप कोई भी एड उठा के देख लीजिए, आपको एक सिर्फ एक नहीं मिलेगा कहीं पे भी. There will be more people involved in Coke. There's always, usually their end screen is two glasses clinking, because there's always, they want to be the social connector of the world. So that's what purpose means. It doesn't mean a cause always, right? Like if I tell you, कल को अगर say Amul probably has a larger cause that they're doing with like farmers and dairy farmers and stuff like that. But there can be 1,000 brands which you won't find purpose with. And that's wherein it becomes problematic. आप सिर्फ cause कर रहे, पर आपका purpose बहुत दूर है उस cause से. राइट इंटरेस्टिंग. तो और मान लीजिए कि हम लोगों ने ये कर लिया, सो पर्पस विल बी मोर, आई डोंट वांट टू आस्क यू लाइक हाउ टू फाइंड पर्पस और वो सब, बिकॉज दैट्स द थिंग, काइंड ऑफ वर्क फॉर फाउंडर्स. हायर करना पड़ेगा भाई मेरे को पैसे. हाँ भाई. सो आई जस्ट वांट टू नो, लाइक यू सेड कि पीपल्स बिहेवियर एंड साइकोलॉजी आपको पढ़ना चाहिए, तो आप समझते हो कि अंडरलाइंग बिहेवियर्स क्या होते हैं एंड बेसिक बिहेवियर्स क्या होता है. व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स बिहेवियर टेंड टू हेल्प देम इन टेकिंग एक्शंस? तो पीपल्स बिहेवियर क्या क्या मोर और ब्रॉडलेस होता है जो उनको एक एक्शन लेने के लिए एस्पायर करते हैं? Yeah, there are multiple reasons why a person would take action, right? There are multiple, again if you learn psychology, there are triggers. हाँ, That's the basic ट्रिगर्स. हाँ term. सभी ट्रिगर हो जाते हैं हर चीज पे. हाँ. बट हमारे टाइम पे ये शब्द ना ऐसे it wasn't used to be thrown around like the way it's thrown around. But the triggers, you need to understand the consumer's triggers, and what the way to understand them is to understand the response they will have to different emotions and different stimuli. You can, like for example, and this works in differently in different categories. Like insurance, for example, let's take insurance as a category. I operate somewhat in like the current company that I'm in, even the brand that I had, we operate in the healthcare category, but we have some health insurance kind of a part in our core product. हाँ. So insurance is sold on the back of fear. Fear triggers the buying pattern of insurance. When I tell you that, hey, look at this person who got cancer and honestly did not have a medical insurance, his family ended up paying 1 crore in his treatment, and even then he did not survive. So now what's happened is the breadwinner of the family is gone and the family is in debt also. So if you should have health insurance, because things like this can happen to anybody, right? Cancer शक्ल देख के तो आता नहीं है. So that triggers, that's the emotion that you trigger. When it comes to automobile, it's usually adrenaline. It's usually the sense of me being able to picture myself in that look. That's the reason they show, these beautiful sexy shots of like drone shots of, cars swerving around here and there, because that generates an adrenaline pump into you. So different categories you'll have to get different emotions to get people to trigger to take action. Some people would get triggered from humor. Some people would get triggered from wholesomeness and stuff like that. So it's very, very different, I think, ways of doing this. हाँ. और like जो Rory Sutherland नहीं है, so he said this very interesting thing in his UK accent, that the urge to appear serious
is in many ways is disaster in marketing. So, like, do you believe in this? Oh my God, dude. Fuck, believe in it so much, it's not even funny. And I fight on it on a daily basis, trust me. Uh, I told you I operate in like a health insurance kind of a category. That's where people, look at our brand. हाँ जब मैं और तुम कोई भी ब्रांड उठा के देख लो यार इस इंडस्ट्री में, सब सीरियस, बिल्कुल स्टोइक, बोरिंग, बिल्कुल ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे आपको, मतलब डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल आर दे सेइंग. This is the urge to sound smart in marketing in general, in हाँ advertising actually. Everyone thinks that if you use simple words or simple language or dumb yourself down, you will be looked at like a dumb person. That's not true. That's not how humans work. Humans, in fact, run away from people who sound very smart हाँ because you won't be able to hold a conversation with them. आज की डेट में अगर मेरे सामने इलॉन मस्क आ गया, मैं पाँव उल्टे करके भागूंगा यार, because I know I'll say stupid shit in front of that guy. और कोई भी अगर कोई बड़ा आपसे intimidating individual आपसे मिल गया. Versus when you use simpler languages, when you connect with people, I can hold a conversation with you because I'm talking your language and you're talking mine. So that is the problem. And लोगों को लगता है कि एटलीस्ट बहुत एडवर्टाइजर्स को ये लगता है कि यार यही बस, एंड स्पेशली इन सीरियस कैटेगरीज तो और भी ज्यादा हो जाता है, वो एम्पलीफाई हो जाता है डबली ट्रिपली. इमेजिन अगर तुमने इवन का पेज खोल के देखना, इवन का इंस्टाग्राम पेज खोल के देखना, हम बहुत जोक मारते हैं भाई, हम बहुत जोक मारते हैं और बहुत गंदे गंदे फालतू जोक्स मारते हैं. कई जोक्स मैं खुद लिखता हूँ इसलिए मुझे पता है वो बहुत गंदे जोक्स हैं. वी हैव फन, वी मेक अ जोक, वी आर लाइट हार्टेड, एंड everyone that I met or have discussed, बाहर से जब लोग consultants आते हैं या people come from outside to give their views, whether it's an investor, whether it's a friend or anybody, everybody had told me that it's easy to sell on fear. Insurance can be sold very easily on fear. Why aren't you doing this? Why aren't you doing this? I was like, dude, no way. I do not want to build a brand like that. That's not me because I joined an early stage company because I wanted to build a brand that is a reflection of me. To be honest, that's my selfish goal, right? मैं कोको कोला को अपने जैसा तो बना नहीं सकता जो 150 साल पुराना ब्रांड है. मुझे उन्होंने जो सेटअप दे रखा है उसके बीच में ही क्रिएटिव होना है. उबर भी इतना पुराना ब्रांड है, सारी गाइडलाइन सेटअप है, मैं अपने अलग ग्लोबल ब्रांड है. मैंने एक अर्ली स्टेज ब्रांड इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि मेरे को अपने हिसाब से बनाना है, और मैं नहीं हूं इतना सीरियस आदमी, मेरे को नहीं अच्छे लगते ऐसे शब्द यूज करने. आई डोंट लाइक टू बी द नेगेटिव screw up in a conversation. So I'm building that brand like that, and it's difficult, but man, that's been our differentiation now. People look at our content, people like write us messages on Instagram saying such great content, we love coming to your page. कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांड इन दिस कंट्री कैन क्लेम कि उनको इंस्टाग्राम पे ये मैसेज आता है कि हमें आपका कंटेंट पसंद है? मतलब कोई नहीं बोलता भाई, ये इंश्योरेंस और ऐसी कैटेगरीज में तो कोई भी नहीं बोलता. आप मैं अपनी जब स्टूडेंट से बात करता, आई टीच ऑन अपग्रेड, आई टीच ऑन ग्रोथ स्कूल, सो I have a slide when I'm talking to my I talk about differentiation. That's a category that a section that I take in teaching. So मैं differentiation की जब बात करता हूँ लोगों से, मेरा पहला स्लाइड ही है, मैं 3 इंश्योरेंस ब्रांड्स लगा रखे हैं और उनके पास लोगोस छुपाए हुए मैंने, और मैं लोगों से पूछता हूँ कि मेरे को बता दो कौन सा किसका है. आज तक I've taught over 1,000 people with that slide. Till date, not a single person has been able to get all 3 brands right. Not a single person. And I've met young people, old people, people who've been in marketing, not been in marketing, everybody. Not a single person till date has been able to tell me all 3 brands correctly. एक कोई गेस कर लेगा बीच में, अच्छा एक किसी ने ब्लू देख लिया तो हाँ ये वाला ब्रांड हो सकता है, या ग्रीन देख लिया तो ये वाला ब्रांड हो सकता है. एक गेस कर लेते हैं, तीनों कोई नहीं गेस कर पाता. वर्सेस अगर मैं कोक और पेप्सी का लोगो हटा के सिर्फ एक ये 2 रंग साथ साथ में रख दूं ना, ये ब्लू और ये रेड, 99% of people will be able to tell me which is Pepsi, which is Coca-Cola. Coke. So that is the problem of differentiation in this category, and I came in from that perspective. So I truly agree that the urge to sound serious is a huge issue. We need a little less cognitive load in 2023 and going into 2024. यार बहुत देख ली दुनिया हम लोगों ने, बहुत फंक्शन देख ली, हम नहीं रहना इतना सीरियस यार. Let's have a little fun, and everything can be, being fun doesn't mean being frivolous, right? Being fun doesn't mean you're taking things lightly. True. You're just trying to lighten the load in a particular situation. अगर मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, मुझे हर बार लोगों को मरते हुए क्यों दिखाना है यार? क्यों?
मैं लोगों को खुश भी दिखा सकता हूँ ना, like there is a world where people can enjoy being happy even if they are sick. So True. yeah, I truly agree with that. And I shameful plug, but check out even.in on Instagram, and you will see how differently we're trying to build the world of healthcare, not just from a product, but also from a marketing and the way we're showing up in front of our audiences. Yeah. So I checked out the events page और मैंने उसमें वो एक जो अभी तुम लोगों ने वो आप लोगों ने वो किया है ना, वो होल्ड योर ब्रेथ एंड शंकर महादेवन Lung टिल, हाँ test. हाँ हाँ, ब्यूटीफुल आइडिया. मतलब ये मतलब शेयरिंग बिहेवियर ड्राइव करेगा. पीपल विल ट्राई, एटलीस्ट पीपल विल एंगेज विद दैट. And we're पीपल विल getting a lot of रिमेम्बर. comments on that कि मैं 4 पे पहुंचा, मैं 5 पहुंचा, and it kind of went viral internally in our office. हाँ. Slack पे सब अपने स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, मैं इतने तक हो गया, मैं इतने तक गया, and there were a few smokers, and we were like, we don't believe you, you're lying. So it was a lot of fun. But again, like, by the way, this lung test exists. There are 1,000 ओके. other brands who've put out this lung test. हमने generate नहीं करा है lung test. It's a tried and tested lung test हाँ. available on other brand websites also. But again, we took a different spin on it. That last thing of Shankar Mahadevan was just a random thing that somebody came up with, right? I don't even know who came up with this in this entire process, but हाँ. somebody said that, and it immediately fits the Indian audience so well because एक nostalgic kick हो जाता है कि अच्छा, oh shit, breathless. ब्रेथलेस. हाँ. So, and those are the things, yeah, you have fun. You're in marketing for that, right? You're in advertising for that, to have a little bit of fun while you're doing this. या सो उसी की वजह से, सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस कि as of now, as 2023, is lightheartedness kind of content is required for any kind of brand right now on social media to grow their social channels? कि आप बहुत मतलब आप जैसे अभी भी फिजिक्स वाला और उन लोगों के भी कौन से क्लिप्स वायरल जाते हैं जहाँ पे वो लोग शायरी मार रहे हैं, या तो फिर वो लोग को जैसे एक फनी वे में समझा रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड अगर ये है, ये वहां से आ रही है, वो आ रही है, तो सर एक आप आपके दोस्त बन के आपको समझा रहे हैं, इस तरीके से समझा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया. Yeah. सो आई थिंक कि लाइट हार्टेडनेस इज इट इम्पोर्टेंट एवरी टाइम कि थोड़ा थोड़ा तो आप रखो? I don't think every time. And yeah, dude, humor has always worked. It will always work. People like to laugh. ऐसा या. कोई दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिसको दुखी रहना पसंद होता है हमेशा, right? सबको खुश होना पसंद. That's why comedy is such a huge genre in movies, right? या. There's a reason why that genre exists because we like to have that. There's a reason why Kapil Sharma is India's biggest star, I think, right? The most household name in India, if there is one. So humor will always work, has always worked, will always work. जब तक हमारी कॉन्शियंस जिंदा है. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमर ही काम करता है, ये भी गलत है. ये भी आई पर्सनली डोंट थिंक दैट्स ऑलवेज. देयर आर सम थिंग्स वेयर you can't be insensitive to make fun of something, right? Always there is a line. Sometimes you can't cross it, is what I feel. So there are times when you need hard hitting things. There are times when you need people to stop and for a second think, oh shit, this is something I did not think about. Or sometimes you don't need humor or anything else, you just need something smart to click, and that's wherein people take a notice. Like, for example, IBM did a very great campaign a few years ago. It was called the IBM Smart Cities campaign, where essentially IBM builds, of course, computing technologies. They make people smart, they make the world smarter, right? That's their larger lens. So they were doing this smart cities kind of a campaign where उन्होंने बिलबोर्ड लिए थे बहुत सारे अलग अलग जगह पे. उन्होंने उस बिलबोर्ड को एक वैल्यू ऐड दे दिया. फॉर एग्जांपल, एक दीवार पे बिलबोर्ड लगा हुआ था, लास्ट में ना उसमें एक ऐसा कर्व था नीचे की तरफ, ताकि आप उसमें बैठ सकते हो, आपके जूते वूते बांधने हो आपको तो, या अगर आप थक गए हो चलते तो उसमें बैठ जाओ. एक उन्होंने एक और जगह सेम बिलबोर्ड का कॉन्सेप्ट, बट इंस्टेड ऑफ इट गोइंग फ्रॉम द नीचे, ऊपर से उन्होंने उसको ऐसा कर्व कर दिया था, तो अगर बारिश हो तो आप उसके नीचे खड़े होकर बच सकते हो. It is no humor in it, it is no emotion in it. It's such a smart thing, right? Like, Smart thing. it fits really well with their purpose of making people smart, making the world smarter. And you stand under a billboard like this, you will forever remember कि यार, एक IBM ने ऐसा बिलबोर्ड करा था, बहुत फनी था और बहुत सही था, बारिश हुई थी, उसके नीचे आराम से खड़ा हुआ था. Things like those also are important, right? So it's not always, you can't go to humor always, right? Especially when, say for example, even in healthcare, I'm not going to make fun of cancer, right? For somebody, I'm not going to make light of that situation.
There are, I can make light of I don't even make light of any sickness, to be honest. We don't make fun हाँ on sickness. We make fun on other things. के जैसे हमारी मार्केटिंग टीम के ऊपर हम बहुत मजाक उड़ाया था। हमने एक बार हमने एक पोस्ट डाली थी, मार्केटिंग टीम के लिए हायर करे थे डिजाइनर। हमारे सबके लंबे बाल है मार्केटिंग में, सारे लड़कों के। सिर्फ एक लड़का है हमारा डिजाइनर, सोमिल, लाइक ही इज द आर्ट डायरेक्टर, एसेंशियली क्रिएटिव डायरेक्टर। उसके कोई भी बाल नहीं है बेचारे के। तो हाँ हमने एक पोस्ट डाली थी, आप मार्केटिंग टीम हैज द बेस्ट हेयर। तो मेरे सारे कॉलीग्स में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, सबके लंबे लंबे बाल, और लास्ट में सोमिल खड़ा हुआ है ऐसे कि ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ। So things like those, we make fun on those, right? We can have fun on those kind of things. एक हमने मलेरिया पे पोस्ट करा, मलेरिया पे, हाँ, पोस्ट करा था जब वर्ल्ड मलेरिया डे पे, कि मच्छरों को मारने के लिए बेसिकली एक पीएसए टाइप था। पर अगर आप पुरानी हिंदी मूवी के शौकीन हो, या अगर आपको पता है, तो एक बहुत पुराना जितेंद्र जी पे पिक्चराइज गाना था, ढल गया दिन हो गई शाम, हाँ जाने तो जाना है, एंड इट्स पिक्चर्ड इन अ बैडमिंटन सेटिंग। द हीरो एंड हीरोइन आर प्लेइंग बैडमिंटन। तो उसमें एक मोमेंट आता है हर 4 वर्ड के बाद, जहाँ पे वो हिट होती है, शब्द हाँ को मारते हैं। तो इट गोज लाइक ढल गया दिन, टक, एक ये टक की आवाज आती है, क्योंकि वो शटलकॉक हिट होती है। हाँ तो हमने सोचा यार, हम भी घरों में बैडमिंटन खेलते रहते हैं, जब भी मच्छर आता है, आज की डेट में सिर्फ रैकेट के साथ ही खेलते हैं। तो हाँ हमने उस गाने पे कर दिया, ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, ढल गया दिन, और एक बंदी रैकेट मारती है मच्छर को उड़ाने के लिए, और बिज की आवाज आती है। उस पे हमने एक रील बना दी, दैट वेंट लाइक रियली रियली वेल फॉर अस। we're not making fun of malaria in it, right? We're just having fun in showing consumers a view into their own life, because it's relatable, because that's या literally what everyone does with a racket. So things like those, yeah. So I think humor is not always required, like I said, but sometimes you do need it. That time, play it. But when you don't need it, don't try and be funny when you can't be funny also, right? Be sensitive. uh, हम्म things जिन पे आपको नहीं मजाक उड़ाना चाहिए, उनको उसको मत उड़ाओ। एक बार मेरा एक लिंक्डइन पोस्ट काफी थोड़े दिनों पहले इस चीज में पॉपुलर हो गया था। जब दिल्ली पोल्यूशन काफी होता है विंटर्स में, पूरी दुनिया को ही पता है अब तो उस टाइम पे मेरे को ब्लिंकिट से एक पुश नोटिफिकेशन आई थी। आंखें ऐसे ऐसे इमोजीज बना के कॉफ कॉफ लिखा था, एंड लिखा था दैट दिल्ली पोल्यूशन से बचो, और एयर प्यूरिफायर लो, और कुछ तो जोक मारा था उन्होंने कॉफ कॉफ करके। तो मैंने उस टाइम पे ये तो उस टाइम पे मैंने लिंक्डइन पोस्ट डाला था कि थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए था इसको। ठीक है, कंटेक्चुअल है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बाहर पोल्यूशन है, लोगों को प्यूरिफायर की जरूरत है, आप बेचो, ऑफ कोर्स आपका काम है बेचना। पर आप थोड़ा तो सेंसिटिवली बोलिए ना, क्योंकि ये हम जो दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे लिए मजाक की बात नहीं है यार ये। मतलब इट अफेक्ट्स आवर लाइफ, इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ, इट अफेक्ट्स आवर चिल्ड्रंस लाइफ एंड देयर हेल्थ। माय niece who's 7 year old has asthma because she's living in a polluted city. It's not something that I'm very happy hearing, jokes on. Similarly, so that I tagged Blinkit and all, and like it just went into a different tangent altogether. People thought I was being a snowflake, but I strongly believe that there is a sensitivity that you have to maintain in people, because at the end we are human beings, and we should be civil with each other, and we should हाँ and we should just see it from the other people's point of view once at least before taking a decision, if nothing else. लेट्स से कि जैसे आप ये इवन में कर रहे हो, इट्स अ न्यू स्टार्टअप और आप स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो देयर सोशल मीडिया एज वेल, और आपके पास ऐसे कोक वाला उबर वाला बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी बजट नहीं होता, ठीक है। सो इन आई जस्ट वांट टू आस्क इन दैट सिचुएशन कि कोई भी अगर एक ब्रांड बिल्ड कर रहा है सोशल मीडिया फ्रॉम दैट स्क्रैच वो सब वाली, सो क्या क्या फंडामेंटल चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये रख के चलो, एंड सो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग इन अ लॉन्ग रन। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा तो है नहीं कि आप एक दो पोस्ट बनाओगे और फिर आप चले जाओगे एंड इट विल बी वेरी ह्यूज काइंड ऑफ सक्सेस। मूनशॉट वाला कंटेंट तो नहीं है, यू हैव टू बी देयर एवरी डे। There's nothing called overnight success, by the way. Yeah. So what are some of the fundamental things that social media managers or their creative team should consider while starting from the scratch? There are a few things that are very important, which I think you should be very, very clear about your purpose. Have very and stick to that. वो immediately काम नहीं करेगा, but over time आपको दिखेगा उसका इफेक्ट। हाँ एक टोन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक स्ट्रॉन्ग टोन होना, जो अगेन आपकी टोन है। ओवर वो टाइम, किस तरीके से फाइंड करता है? आई एम सॉरी। लाइक हाउ यू टॉक ओवर टाइम ओके। आपकी ब्रांड पर्सनैलिटी होती है। जोमेटो कल को बिल्कुल सीरियस बात करने लग जाएगा, जोमेटो नहीं लगेगा ना। हाँ सो ऐसे आपको टोन अपनी फाइंड करनी है, और सालों लग जाते हैं भाई वो करने में, ऐसा नहीं होता ओवरनाइट।
So the tone is important, and it's important to have your calendar and a longer view on the things you want to create. And don't try and be relevant every time. You will not. हर engineer day, math day, pi day, रक्षाबंधन, दिवाली, हर चीज पे आप relevant नहीं हो सकते. मत करो कोशिश. चूज योर बैटल्स इज व्हाट आई वुड से. जहां पे आपके पास बहुत कूल हो बोलने के लिए तब बोलो, वरना मत बोलो. नोबडी इज आस्किंग फॉर योर कंटेंट. And consistency, yeah, that's key. Just keep trying, keep experimenting, and bring your own self into, because if you're an early stage young, so tumhara personality will be shown on the page, right? So that becomes important, that you're true to it and you're spending time with yourself and with your brand in that sense. So those are some elements which are very, very important. Planning is very important. Setting up a guideline is very important. Brand guidelines in terms of visual colors and tone. क्योंकि अगर अगर इमीडिएटली आपको इफेक्ट नहीं देगा, बट ओवर टाइम बहुत हेल्प करेगा. हाँ हाँ ओके. एंड जो आपने एक चीज बोली थी कि ह्यूमनाइज करना है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, लाइक हाउ हाउ वन कैन डू दैट? यार ह्यूमनाइज करना इज वेरी वेरी इजी बट ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. हाँ वही. ह्यूमनाइज ना करना, काम करना बहुत आसान है, उस पर वो डिसीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि लोगों को डर लगता है वो करते हुए. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. एवरीबडी थिंक्स यार अगर मेरा ब्रांड पेज है तो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ही दिखाना है और कुछ नहीं. But that's not why people come on social media. People don't come on social media only to look at products, right? They'll come on social media for a variety of different things. And if you can give them that, that's what becomes important. So humanizing is, your page should feel like a person, right? It should feel like, यहाँ पे 2 मिनट में गुजार सकता हूँ, इनसे बात कर सकता हूँ. That is humanizing. Humanizing is to showcase vulnerability, to showcase emotion, to showcase, to have a laugh, to say sorry when you screwed up, to answer people at the right time with the right message, to not act like, brands and companies are always seen as these suited, booted executives. To not be that person is your job on social media. And again, it's also important that that follows through on all the other assets of the brand as well. ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी दुनिया में इतने बिल्कुल ही सूट बूट वाले सीरियस और सोशल मीडिया में ट्राइंग टू बी फनी, तो लोग आपको इतना ट्रोल करेंगे जिसका कोई अंदाजा नहीं है. सो यू नीड टू फॉलो थ्रू विद योर ब्रांड एवरीवेयर, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू फील लाइक अ ह्यूमन, बिकॉज पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा लोग खरीदते हैं चीजें. सो पीपल बाय मोर व्हेन दे हियर अनदर ह्यूमन, नॉट व्हेन दे हियर अ कंपनी. और जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर, लाइक एज आई क्रिएट पॉडकास्ट का कंटेंट हमारा जाता है हमारे सोशल मीडिया के वहाँ से. सो आई रियलाइज दिस रिसेंटली ऑन इंस्टाग्राम, दैट मुझे ये थोड़ा लेट रियलाइज हुआ कि शेयरिंग बिहेवियर ज़्यादा एक्टिवेट करना है टू गेट मोर एंगेजमेंट, मोर व्यूज, वॉट एवर इट इज. अगर शेयर्स बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी विल शेयर या आपको एंगेजमेंट बिहेवियर करना है, नॉट सिर्फ शेयर. शेयरिंग तो एक चीज है, बट इवन इफ यू कैन इंड्यूस पीपल टू कमेंट, इवन दैट विल हेल्प, राइट? लिटरली एक तो हमारा जैसे आपने पोस्ट का एग्जांपल दिया था, दैट इंड्यूसेस शेयरिंग, बिकॉज उत्सव विल बी लाइक, he'll want to challenge his friend निखिल के, भाई देख मैं तो 7 तक पहुंचा, तू देख कितना कर पाएगा. It has that factor in it. Zomato yesterday put out a post saying the most random comment in this thread with 0 likes wins a prize. अब ऑफ कोर्स उन्होंने लिख दिया तो कमेंट तो सब कर ही रहे हैं, पर अब लोग, उसने ये बोला कि विद 0 रिएक्शंस विंस द प्राइज. तो लोग दूसरों के कमेंट पे जाके कमेंट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे को हराना है. so it's created like a multi-layer threadception within it. So those kind of things should be built in, that either it induces you to share it with somebody, or it induces you to jump into the comment section and write something, ask questions which are very basic and very very normal, which everybody should know the answer to. Those are the times when people will come in and answer the most. So things like those are tricks you need to use. And another thing is in social media only कि ये posting वाला हो गया. दूसरा एक fundamental question होता है कि आपकी audience क्या है, which I am right now struggling with to understand कि हमारा core audience कैसा दिखता है, क्या behavior उनका, because there are multiple people from multiple age group या तो फिर multiple cities that we are finding. तो is it necessary to create that target audience
फॉर योर पेज कि क्योंकि और फिर वो अगर वो करनी चाहिए तो फिर वो किस तरीके से वो टारगेट ऑडियंस को मैं देखूं कि हाँ दिस इज माय टारगेट ऑडियंस, आई एम रियलाइजिंग दिस, और फिर मैं उसको जाकर टारगेट करूंगा. राइट नाउ आई एम इन दैट एक्सप्लोर जोन कि जहाँ पे मैं डार्ट्स मार रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे कनेक्ट होंगे फिर मैं जाके उसको थोड़े टाइम के बाद देखूंगा कि हाँ यहाँ पे एकदम करेक्ट लगा है, तो दिस माइट बी सम ऑफ माय कोर ऑडियंसेस. यार देख, व्हाट इज द what is the straight way to approach this? I'm Good old way. school on this. I feel you need a target audience. You need हाँ a defined target audience because तुम एक प्रोडक्ट बना, like even the podcast is your product. हाँ प्रोडक्ट बना रहे हो, तुम्हें पता है कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, एंड वो तुम्हें पता होना चाहिए. एक ब्रॉड आइडिया तो होना ही चाहिए. ओवर टाइम इट कैन इवॉल्व. ओवर टाइम तुम्हें अलग अलग फैसेट्स पता चल सकते हैं लोगों के बिहेवियर के बारे में, which you did not think of or assume of earlier, and you'll be like, okay, shit, I have to change my strategy, which is okay. But आपको एक, even if your analogy, if you're just throwing darts, but you need a fucking dartboard at the end of the place हाँ to do it at, right? You need some. तुम हर बार बुलजाई नहीं हिट करोगे, बट आपको कुछ तो चाहिए ना, कहीं तो हिट करना है. आप गधे को एक खुले मैदान में छोड़ दोगे तो गधा हर जगह भागेगा. वर्सेस आप उसको एक डायरेक्शन तो दे दो, थोड़ी सी डायरेक्शन दे दो, सीधा भागना है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए. तो हाँ I think that's something which is needed. If you have like a broad idea of your target audience, then you can add layers over time saying कि अच्छा मुझे आज ये nuance पता चला इसके बारे में. You'll speak to the people that hear your podcast. You'll understand the words they like, the moments they like, or things that they felt were missing. Like you didn't have a fun segment, you didn't have a whatever reel out of it, some shit like that, right? They can give you a lot of those ideas over time, but आपको एक पहला baseline तो चाहिए ही चाहिए. उसके बिना आप you will not serve anybody. And again, one of the core, there's a saying that I live by, and whenever I used to write my stuff in advertising, or when I was building strategies in advertising, when I'm building strategies now, the one thing that is most important, the soul of strategy is sacrifice, which means you need to know what not to do, and what to let go of for you to focus on one thing. Focus on that thing and then add on other things later. It's easier to do. It's also the most difficult to take that decision. ये बोलना is, I don't mean to say you're that person, but ये मेरे को lazy behavior लगता है कि मैं सब कर रहा हूँ. That means you've not spent the time on trying to understand कि मेरा product सबके किस person के लिए ज़्यादा है. अच्छा है. Essentially, you have to not, because at the end every product is bought by everybody. हाँ हर पर्सन हर चीज खरीदता है, पर किस पर्सन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट और इजी है वो लेना, हैज टू बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, सो लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क फॉर दैट कि किस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा नोट जॉट डाउन करना चालू करूँ कि जहाँ पे मुझे एक रफली आइडिया आ जाए, जहाँ पे मुझे क्लियरली कुछ आइडिया नहीं है तो मुझे एक ब्रॉड आइडिया आ जाए कि हाँ दिस इज हाउ माय ऑडियंस लुक लाइक. एक ब्रांड, ये क्या होता है, सॉरी, अपना टारगेट पेन पोर्ट्रेट बनाओ यार, सबसे सिंपल चीज है. वो आई एम सॉरी वो क्या होता है? वही में एक टीजी पेन पोर्ट्रेट सर्च करिए गूगल पे. टीजी हाँ मींस टारगेट ग्रुप. उसका एक पेन पोर्ट्रेट बनता है. पेन पोर्ट्रेट मींस शब्दों में आपकी मैं एक छवि बना रहा हूं बेसिकली. तो व्हेन ओके आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉडकास्ट लाइक योर्स, माइट, एंड और इसमें आपको बेसिकली पैराग्राफ लिखना है या अलग अलग बुलेट पॉइंट्स में अलग अलग फैसेट्स लिखने हैं आपके ऑडियंस की लाइफ के बारे में. स्टार्टिंग फ्रॉम एज, कहाँ रहते हैं, कितनी उनकी इनकम है, क्या भाषाएं बोलते हैं, बाहर जाते हैं कि घर पे रहते हैं, कितना स्पेंड करते होंगे, क्या होप्स एंड ड्रीम्स हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, बच्चे हैं कि नहीं है, क्या एंजाइटीज हैं जिंदगी में, क्या फियर्स हैं जिंदगी में. ये आपको एक पेन पोर्ट्रेट बनाना होता है. इट्स कॉल्ड अ पेन पोर्ट्रेट. एंड द मोमेंट यू बिल्ड इट इज व्हेन क्लैरिटी स्टार्ट्स इमर्जिंग. मेरा ऑडियंस एक 25 से 28 साल के बीच में मेल्स फीमेल्स दोनों हैं, जो अभी कॉलेज से निकले, उनको थोड़ा टाइम हो गया है, बट देयर इन समवेयर इन द मिडिल मैनेजमेंट इन देयर वर्किंग प्रोफेशनल करियर्स. उनको वो चाहते हैं बिलियनर बनना बाय द टाइम देयर 40. दे वांट टू रिटायर बाय द टाइम देयर 40, बट they are stuck in a corporate ladder. They don't know what to do. They see other inspirational people, want to get inspiration from them, but it's very difficult for them to reach them. So you find, जब तुम यहां पहुंचोगे तब तुम्हें realize होगा, oh shit, there's a white space, because inspiration सिर्फ इलॉन मस्क से नहीं आ सकती है. inspiration बड़ौदा में बैठे हुए एक ऑथर से भी आ सकती है, जो मुझे लाना आसान है,
and the words I use will hit the target audience because they're looking for relatability. They're looking for examples of success in their closed community, not only the Zuckerbergs and not only the Elon Musks and Bill Gateses of the world. Then you हाँ figure out, oh shit, now is the white space. You see, like literally while talking to you, we've been able to come to one thing. And हाँ it's just that you need to kind of layer, and you like connecting the dots. So the more dots हाँ you connect, the better it is. When you're building up strategies, when you're building up target audience, always think of them like onions and keep peeling the layer, keep peeling the layer, keep peeling the layer. And always ask, so what is the question you always need to answer. I want to create a podcast. So what? So it'll do this. So what will happen? So what? So what? Just keep asking yourself, so what? So what seems like a very rude question. हाँ बट आप उसको अपने आप को जितना आंसर कर पाओगे ना, जितना लास्ट सो वॉट तक जा पाओगे, उतना आप फोकस और बहुत बहुत शार्प स्ट्रेटेजिक डिफरेंस पे आ सकते हो. correct. Interesting. This is very nuanced and really good for me and people who are watching this. So, जैसे कि I admire Tanmay Bhatt a lot, and some of the frameworks he uses and the way he says things. तो उसने ये चीज़ बोला था कि जब वो लोग AIB के लिए कंटेंट बनाते थे, it was kind of a moonshot. 1 महीने में एक बार आएंगे, पर ऐसा आएंगे कि मिलियंस, बहुत ज़्यादा लोगों का हो हल्ला मच जाएगा, लाइक मीम्स बनते होंगे हमारे हमारे वीडियोस के ऊपर से. नाउ हिज स्ट्रेटजी इज कि आई विल कम एवरी वीक में 1-2 बार, और मैं थोड़ा मशीन गन काइंड ऑफ कंटेंट बनाऊंगा कि एक दो उसमें से लग जाएगा. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट यू आर मेकिंग. सो इन मून शॉट्स तो अभी उसके लिए ऐसा है कि एड्स विच दे आर राइटिंग, it is his moonshot right now कि Yeah. बहुत ज़्यादा पैसा are riding on it, and we have to get only one IPL in 1 year, so we have to get it right on at that point of time. So in your hypothesis और आपका जितना experience रहा है, what are some of the frameworks that can lead to that moonshot thing कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो शायद से ये एक अच्छा कंटेंट बनेगा कि जो it will be widely talked about. मैं पिछले 5-6 सालों से एक ही फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा हूँ इसमें. वो है, यूट्यूब ने एक फ्रेमवर्क बनाया था 2012 में. इट्स कॉल्ड द हीरो हब हाइजीन फ्रेमवर्क. हीरो हब हाइजीन फ्रेमवर्क. सो हीरो हब हाइजीन क्या कहता है कि हाइजीन कंटेंट आप पहले बनाओ, विच इज योर एवरीडे कंटेंट, जो लाइक ऑलवेज ऑन कहते हैं जिसको, जो आपका मशीन गन हो गया इस केस. हाँ सो दिस इज बेसिकली द फाउंडेशन. इस पे आप, ये आपका ओवर टाइम पर्सनालिटी डेवलप करते रहेगा. इट्स नॉट गोना रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, इट्स नॉट गोना रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, बट समथिंग यू नीड टू कीप पुटिंग दैट योर टॉप ऑफ माइंड ऑन पीपल. yes तो तुम लोगों की फीड में आते रहोगे. हाँ अब होता है इससे थोड़ा ऊपर, जो आप इतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं कर सकते, वो आप हब में करोगे, जो महीने में एक आएगा शायद. As a brand, like I'm talking about a brand framework in this, right? Not like an influencer framework. हाँ तो ब्रांड के केस में होगा, जो आप इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन करोगे. हर रोज तो आप इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन कर नहीं सकते, पैसा लगता है. तो आप महीने में एक करोगे या हफ्ते में एक करोगे, तो ये हर रोज के कंटेंट से थोड़ा ऊपर हो गया. हर हाइजीन कंटेंट विल बी स्टफ लाइक ईमेल, पुश नोटिफिकेशन, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, ट्वीट्स एटसेट्रा. ये आप हर रोज कर रहे हो बैठ के, ये मशीन की तरह हो रहा है. इसमें आप 100 में से एक शायद लोगों को पसंद आ जाए, थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म कर जाए लोगों से. हब आप बनाओगे महीने में एक, 2 हफ्ते में एक टाइप. और लास्ट होता है हीरो, जो आप साल में एक या दो ही करोगे, पर तब आप पूरी पूरी जान लगा दोगे उसको वायरल या उसको बड़ा बनाने में. दिस इज द आईपीएल एसेंशियली, दिस इज द मून शॉट और व्हाटएवर. हाँ This is where more money is required. This is where more resources are required. This is where more time is required. And this is where you'll put all your efforts into making it a grand success. So Hero Hub Hygiene becomes this framework. Hygiene हर रोज का, Hub बीच का, Hero साल में एक या दो बड़े त्योहार जो आप करोगे. That becomes that's a framework I've been using for a really long time. It really helps me plan. It helps you plan. The moment you can plan, you have more free headspace. The more you have free headspace, the better you can think. और हाइजीन की वजह से ये भी होता है ना कि आपका फीडबैक लूप बहुत शॉर्टर हो जाता है. लाइक यू कैन गेट टाइनी टाइनी फीडबैक लूप, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये चलेगा, तो आपको जो लार्जर बनाना है वहां पे ये सारे टाइनी फीडबैक लूप्स आपको काम आएंगे. अगर आपको स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग्स पता हो, तो हब का रोल क्या रहता है? हब का रोल रहता है बेसलाइन को थोड़ा सा ऊपर पुश करना. ओके क्योंकि आप
हाइजीन करोगे तो आपका एक फ्लैट लाइन रहेगा, राइट? वही लोग देखते रहेंगे, वही लोग आते रहेंगे। अब हब करोगे, हब को एक ब्लिप मिलेगा ऊपर हल्का सा, क्योंकि आपने इन्फ्लुएंसर करा तो थोड़ी ज्यादा ऑडियंस को दिख गया, फॉर एग्जाम्पल, या आपने थोड़ा सा पैसा डाला, थोड़ी ज्यादा ऑडियंस को दिख गया, सो देयर बी अ ब्लिप, राइट? सो व्हेन दिस ब्लिप हैपेंस, द बेसलाइन मूव्स फ्रॉम हियर टू स्लाइटली हियर। फिर आपकी राइट बेसलाइन धीरे धीरे बढ़ती रहती है ओवर टाइम। दैट्स हाउ स्टैटिस्टिक्स वर्क्स। एंड then because your baseline is higher, then when you do hero, a much larger organic following you anyway have to push that content even further, and over time it just keeps building up later. राइट राइट इंटरेस्टिंग हाँ अभी मुझे वो बात करनी है द पॉलिटिकल कैंपेन जो आपने किए थे अराउंड 13-14 सो हाँ, एट द पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे जनरल इलेक्शंस हो रहे थे व्हाट डू यू थिंक जो द नरेंद्र मोदी वेव जो थी उस टाइम पे थी लाइक इट वाज वेरी गुड ब्रांडिंग मैंने सोहेल सेठ का अभी एक वीडियो देखा था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या तो फिर उनकी जो ब्रांडिंग होती है एंड राहुल गांधी द वे ही वांट्स टू प्रेजेंट हम नरेंद्र मोदी विल ऑलवेज बी बेटर देन हिम फॉर एक्सवाइजी रीजन मैं भूल रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट बट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो चीजें समझाई थी बट व्हाट डू यू थिंक एंड इन 2014 व्हाट हैपेंड दैट लेड टू बीजेपी बीइंग अ मेजोरिटी पार्टी की जो अच्छी तरीके से अच्छे वोट से वो लोग जीत गए कहाँ क्योंकि आपकी अभी एक रील भी आई थी कि पॉलिटिकल जिस तरीके से कैंपेन होते हैं और मार्केटिंग जिस तरीके से होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती थी आर ट्राइंग फॉर exactly. वोट वी आर ट्राइंग फॉर सेल्स और वॉट एवर काइंड ऑफ बिहेवियर एंगेजमेंट जो भी है वो तो जी, हाँ सो लाइक व्हाट हैपेंड बैक देन कि ये चीजें हुई और क्या क्या वो लोग भी नोटिस करता है जो मार्केटिंग में काम आ सकता है फाउंडेशनल एग्जैक्टली। तो एक तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या निगेट नहीं कर रहा है इससे, सो हाँ बिफोर पीपल स्टार्ट जंपिंग ऑन योर कमेंट सेक्शन फाइटिंग, so I think for us, let's look at the classes in marketing and advertising and brand building in this. That's what I'm looking at only. I think a few things that there are a lot of things that worked for the BJP at that time, but from a brand perspective, a few things that as a brand you can apply any day. One, make a villain. Always have a villain. If you can build a villain, then it becomes easier why your brand is the solution. You build a problem essentially, right? आप एक प्रॉब्लम बना, एयर प्यूरिफायर बेच रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? कंबस्शन इंजन। सैमसंग का टीवी बेच रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? गंदी पिक्चर क्वालिटी। हमेशा एक प्रॉब्लम आप बनाते हो। अ विलन इज ऑलवेज मेड, so we all know what villain they made at that time. But having the opposition as one villain, but also महंगाई as a villain, women's safety as a villain, LPG and petrol prices as a villain. So building a villain is important. B, have the you have to have rituals. There's a thing in advertising called building rituals. Um, and building rituals can be done through a variety of things. Either get people to do something or create a statement or a phrase that becomes a ritual. In this करेक्ट case, they coined that term Abki Baar Modi Sarkar, which became over time, that's the thing that became everybody's go-to thing. It became a pop culture thing. हाँ Because वो phrase इतना smart था और इतना easy था. So that become like, for example, Oreo का ritual होता है twist, lick, dunk. That's a ritual that they've created. So over time, they're owning that ritual. तो ऐसे ऐसे आप ना phrases या memeable content almost, which is in today's day and age, that's something that they built very strongly. करेक्ट Third, having a very very clear solution. That was I think the most important thing that they did. The solution was Mr. Modi. Any problem in India, Mr. Modi was the solution. They had a very clear solution. So over time, आप ये तो इंडियन इलेक्टरल प्रोसेस का शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है, बट आज तक है और हमेशा रहेगा, मेरे को लगता है कि आपको अपना एमएलए पता ही नहीं है कौन है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का कौन काम करता है नहीं पता, आपको हाँ सिर्फ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पता है। तो उन्होंने वो उसको राइड करा, उन्होंने बोला यार अगर ऐसे ही चल, और इंसानों को एक दो ही नाम याद रहते हैं, उससे ज्यादा याद नहीं रहते किसी को।
उन्होंने बोला पूरे देश में मोदी का डंका ही बचेगा. So that's exactly what they did. They followed a toolkit, even though they hate toolkits, but they followed a toolkit saying that this is the solution to everything. And that worked because over time. The fourth thing that they did very interestingly was they knew their audience very well. They built a very strong audience profile and they did a very strong segmented reach out. उनका वन साइज फिट्स ऑल नहीं था भाई स्ट्रेटेजी. उनका ये नहीं था कि हमने बस एक चीज बोल दी. दे हैड दिल्ली में साउथ दिल्ली के इस ब्लॉक का अलग कैंपेन था, उस ब्लॉक का अलग कैंपेन था, बिकॉज मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है सुएज की, उनको वहां प्रॉब्लम है कि उधर पार्किंग कम है, और मंगोलपुरी में प्रॉब्लम ये है कि जब से वहां फ्लाईओवर बन रहा है तब से वहां ट्रैफिक बहुत हो गया है या धूल मिट्टी बहुत. दे वेंट टू दैट एक्सटेंट, राइट, टू काइंड ऑफ get segmented delivery of messaging done. And they also realized that 2014 they won on the back of first time voters. They knew that a whole lot of जनता is coming in as voting population because अब 18 साल के काफी लोग हो रहे हैं 2014 में, और अब हो गया मोबाइल फोन का जमाना. अब ये लोग हो रहे हैं वोक. अब सबको चाहिए कि दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. हमारे बाप अब तो साले वोट करने जाते नहीं थे, उनकी वजह से हम इतनी गंदी जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने हाथों में, लाइक दैट्स द जज्बा ऑफ द यूथ एट दैट टाइम. So they realized they will follow a digital first strategy, and that's what they did, and that's how they won. I feel like a lot of these things you can easily copy in building a brand. Know a villain, build a solution simply, have a very clear toolkit of how it performs. Audience segmentation, very very important, and consistency is very important. Blitzkrieg था यार 2013-14 दोनों ही, मतलब मैं तो सोया ही नहीं था कितने टाइम, क्योंकि हर रोज हम मुद्दा चेंज कर देते थे. आज महंगाई पे मुद्दा है, कल विमेन सेफ्टी पे मुद्दा है, परसों इलेक्ट्रिसिटी पावर कट्स बहुत हो रहे हैं उस पे मुद्दा है. आपको हर रोज अलग अलग मुद्दा है. यू हैड टू कीप योरसेल्फ रेलेवेंट एवरी डे. दो दैट यू हैव टू आल्सो कैन लर्न. कोई एक चीज गलत हो जाती है, सो पीपल विल हाईलाइट दैट, एंड 100 थिंग्स जो अच्छी हुई है वो कोई लाइमलाइट में नहीं आएगी. डू यू थिंक, अभी अभी मैंने रिसेंटली एक दो ब्रांड्स के अराउंड भी देखा था मैंने, कि ये चीजें हुई कि बहुत छोटी मिस्टेक हुई होगी, या तो फिर हुई होगी थोड़ी सी मिस्टेक, बट इट गेट वेरी हाईलाइटेड अ लॉट, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि पीआर मशीनरी एक्टिव हो जाती है कॉम्पिटिटर्स से. होता है क्या ये चीजें? बहुत होता है, बहुत होता है. मेरे साथ इवन में आज तक हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग से हो रहा था, और हम तो इतने छोटे ब्रांड हैं. आप कोई इंसिडेंट बता सकते हो क्या विदाउट टेकिंग कॉम्पिटिटर्स नेम, कि यार ऐसा कुछ हुआ था? मतलब we've seen emails from competitor inboxes in our members emails discouraging them from buying even, like till that extent I've seen with my own eyes. So I can tell you the machinery does get activated. राइट राइट. हाँ, सो ओके, सो लाइक फिर तो वहां पे मुझे तो ये इसी के ऊपर, तो फिर वहां से आप किस तरीके से ट्राई करते हो कि ये ज्यादा बहुत अफेक्ट ना हो ब्रांड को, कि बहुत Yeah, ज्यादा हद तक नहीं बढ़ जाए? there are multiple ways you do that. Yeah, you also have your PR machinery. You also have to create content fast so that you put more content and that gets died down. A करेक्ट. lot of tricks and tactics you have to use. If it's, of course, if it's maligning and not correct, if हाँ. somebody's not, if somebody's just trying to screw with you essentially. But if you are at fault, then I've realized the best thing to do is, as a brand, also stand, own up to your mistake, and then go forward. People will value that more. People will value brands who will say that yes, we screwed up, and we're very sorry about it, and we did not have this intention, and we are going to introspect and ensure that this never gets repeated again. And people will value and respect that much more than you trying to hide behind something else. या करेक्ट करेक्ट. मैगी देख लो यार, मैगी से बड़ा एग्जाम्पल ही नहीं है इंडिया में. हाँ. Led, we have forgiven a brand for feeding us poison because it's a brand we love so much, because they realized, they came up and said, yes, we screwed up, we're going to change things. And I don't think 90% of India even remembers कि ऐसा कुछ हुआ था मैगी के साथ literally 4 साल पहले. हाँ. Thank you so much for doing this. I really had a great time, and I hope you had too. Likewise. Yes. Likewise, man. Thank you so much. This is a complete pleasure. I hope you get one extra view because of me. This is amazing, and I hope your viewers, listeners have a great time. Yeah, and if you enjoyed this too, then please do drop a like, share this video with your friends, and
comment down your favorite learnings, your favorite parts from this episode. So yes, thank you so much. Thank you.